Hi leaders, this is Ram Naresh Ganti calling from United States of America. Once again, I want to give a recap to everyone based on what the company has given updates in their Telegram channel. Okay, for i100, the company has given the update in the Telegram channel that the month of May and June, the company is going to migrate all the i100 shares of all the i100 members into YI back office. And from June-July time frame, company will start paying the dividends or bonuses for all the i100 shareholders. And once the clearance of the Philippines issue, they will go through the listing process. Okay, so this is the update on the i100. On the i200, company restored the back office, so we can log into the back office now, but there is a clear message in the back office that it's still in the maintenance mode till 30th of April. Okay, so, and I did check myself, the savings account funds, the tokens are still in the savings account. They did not move to open account. And any of the withdrawals in the cash account withdrawals or loyalty balance withdrawals, or so nowhere we can select the SMGTO address in order for us to do the withdrawal. So I'm hoping that probably in 1 to 3 days the company is hopefully like they will fix the issue, or they will finish the maintenance process hopefully, and then we can start doing the withdrawals of the loyalty balance into SMG tokens. And if you have any cash account balance, that also into SMG tokens. And if the company also move the savings account tokens to open account, we can also do the withdrawals of that into SMG tokens as well. So once again, I'm repeating, I created a flow clearly and a pie chart, and I did post it in the group. For i200, 3 different categories. One is all the savings account tokens will move to open account, and from there we can do the withdrawal. Okay, and those withdrawals will be given in SMG tokens. And the second one is the cash. If in case you have any cash account money in i200, that also we can withdraw into SMG tokens. And the third one is loyalty balance. Company said they're going to raise the loyalty balance withdrawal limit to 10% or so, and so we can start withdrawing the loyalty balance also into SMG token. So overall, all the i200 stuff will come as SMG tokens, and my assumption is that we are going to be paid at $0.01 per token. Okay, not live rate to my knowledge, unless if company changes the strategy, I don't know. Okay, but so, and then YI, of course, it's very clear. And when you buy a package, we get the tokens at a live rate, and the company has made a rule that every Saturday they transfer the tokens to SMGTO automatically. Okay, and then of course, if you build your business in YI, the company will pay according to the compensation plan. And there are some discounts, some deals the company has given. If you buy package, you get 80% CV, you get 175% loyalty points, and you have a Sri Lanka trip and all these kinds of things. That is all YI. But for i100 company will, May, June, the company will transfer all the shares to YI and will start paying us the bonuses and dividends from June, July. Okay, and for i200, we are all waiting. Hopefully after 30th of May, we all can hopefully we can withdraw all the savings account tokens, loyalty balance, withdraw to SMGTO, and also if in case you have any cash account money, that also we can withdraw into SMG tokens. This is based on the company's Telegram channel updates. Okay, so I'm not unique. I'm not a creator here. I'm only communicating here as a member. Okay, I'm just communicating what the company said in the Telegram channel updates. Okay, that's all I'm trying to say. I'm not
a corporate member. I'm not a corporate person, so I don't have any influence or anything like that with management. So I'm just giving this information just so that you have understanding. Okay, so let me say in Hindi also. Some people understand Hindi, so मैं हिंदी में बात करता हूँ अभी. ठीक है, so कंपनी i100 में कंपनी ने क्या बताया, i100 का शेयर्स जो है वो शेयर्स को कंपनी मई जून में वाई में ट्रांसफर करेगा. ओके, और वाई में ट्रांसफर करने के बाद जून जुलाई से हमको कंपनी हमारा शेयर्स में कंपनी हमको डिविडेंड्स या बोनसेस देगा. ठीक है, ये अपडेट कंपनी ने टेलीग्राम चैनल में क्लियरली पोस्ट की है. और i200 के बारे में और SolMax ग्रुप के बारे में कंपनी 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं. इसमें एक कैटेगरी है आपका लॉयल्टी बैलेंस को आप SMG टोकन्स में लेते हो. ओके, एंड देन आपके पास कोई कैश अकाउंट का फंड्स है i200 में, वो भी आप SMG टोकन्स में लेते हो. और आखिरी में आप हमको सेविंग्स अकाउंट में कंपनी 3 इयर्स के लिए लॉकिंग कर रहा था टोकन्स. उस सेविंग्स अकाउंट का टोकन्स को कंपनी ओपन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला, और उस ओपन अकाउंट का टोकन्स को भी हम SMG टोकन्स में ले सकते हैं. अभी कंपनी का मेंटेनेंस काम जो है वो i200 का खत्म नहीं हुआ, इसलिए हम अभी विथड्रॉल नहीं कर सकते हैं. जल्दी ओपन होना चाहिए, एंड देन हम सारे कैटेगरीज को हम टोकन्स में लेने का चांसेस होगा. सो इसलिए i200 और SolMax में कैश अकाउंट का भी हो और सेविंग्स अकाउंट का भी हो और लॉयल्टी बैलेंस का भी हो, हम SMG टोकन्स में ले सकते हैं. मेरा सोच में कंपनी SMG टोकन्स हमको $0.01 में देगा. ये मेरा सोच है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है. कंपनी लाइव रेट में देने का कोई भी चांसेस नहीं है, बट कंपनी चेंज करेगा तो रूल मुझे मालूम नहीं है. ठीक है, और उसके बाद वाई में तो काम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इसके लिए इसमें आप पैकेज परचेज करते हो, लाइव रेट में आपको टोकन्स मिलते हैं, और एवरी वीक सैटरडे में कंपनी आपको टोकन्स को SMG TO में ट्रांसफर करेगा. ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग इनकम बिल्ड करते हो, इनकम आएगा बोनस वॉलेट में. बोनस वॉलेट का फंड्स को कंपनी अभी SMG टोकन्स में दे रहे हैं, और बाद में कंपनी USDT और इवन बैंक का भी काम ट्रांसफर करने का ऑप्शन देने के लिए बोल रहे हैं. सो अल्टीमेटली दोस्तों, सो यही अपडेट्स हैं. ये अपडेट्स मेरा नहीं है, ये अपडेट्स कंपनी का है. टेलीग्राम चैनल में कंपनी जो भी पोस्ट किए हैं, वही पोस्ट को मैं आप लोगों को अगेन दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इन हिंदी, आई होप यू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, and let us all keep our fingers crossed how smoothly we can do the i200 withdrawals. Okay, thank you so much, and I wish you all everybody a happy weekend. Okay, Saturday and Sunday. Okay, take care, bye everybody.